बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इलेक्शन एक ऐसा मरहला होता है जिसमें आप अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं। ये आपका हक तो है ही, फ़र्ज़ भी है। 10 जून को मिसिसागा में मेयर के इलेक्शन हो रहे हैं और साथ ही वार्ड 5 के काउंसलर के इलेक्शन भी हो रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें जनरली जो काउंसलर्स हैं उनमें हमारी कम्युनिटी के शायद ही वंस इन वाइल ही शायद कभी कोई काउंसलर बना हो, मुझे तो याद नहीं पिछले 20 साल के दौरान। लेकिन हमारी कम्युनिटी के बहुत से दोस्त इस हवाले से कोशिश करते रहते हैं। इमरान हसन साहब वार्ड 5 से इस वक्त सिटी काउंसिल के उम्मीदवार हैं। इससे पहले भी वो इसमें इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं और अच्छे वोट जो हैं वो हासिल कर चुके हैं। तो आज हमने इमरान हसन साहब को दावत दी स्टूडियोज़ में कि उनसे बात करते हैं। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत जी, बिल्कुल आपकी दुआएं। अच्छा, आपने शिफ्ट किया वार्ड, ज़ाहिर अपॉर्चुनिटी जब हो तभी अच्छी, उसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। जी जी। और आप जनरली मैं चाहूँगा लोगों को पता चले कि एक तो आप एज एन सिटी काउंसलर जो है इलेक्शन के लिए जो है उम्मीदवार हैं, ओवरऑल आपकी कम्युनिटी में अचीवमेंट इन्वॉल्वमेंट क्या है, आप करते क्या? चलें ये इस तरह से पूछ लेते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। असल में क्या कहते हैं, मिसिसागा में हम 30 साल से ज़्यादा यहाँ हैं। हमारे वो जो क्या कहते हैं बिजनेस है वो मिसिसागा में है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में। हमने कायम की थी बिजनेस, मैंने तो खैर नहीं, हमारे अब्बू ने कायम की थी 1983 में इन मिसिसागा। और जब से क्या कहते हैं उसी नाम से उसी इंडस्ट्री में हम आहिस्ता आहिस्ता उस बिजनेस को बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं 30 साल से खुद काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। तो कंपनी ट्रांस ग्लोबल सिस्टम्स ऑफ कनाडा इनकॉर्पोरेटेड इज अ टेलीकॉम कंपनी एंड हम सप्लाई करते हैं द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। वो हमारी क्या कहते हैं, आप बोलते हैं बिजनेस है, दैट्स ब्रेड एंड बटर। तो उसके साथ साथ कम्युनिटी सर्विस भी बहुत मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। सो मैंने क्या कहते हैं एटलीस्ट 20 साल के अंदर अच्छे खासे दूसरे क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज में, डिस्टेंट इंस्टीट्यूशंस में मैंने क्या कहते हैं वॉलंटियर सर्विस की है। मिसिसागा बोर्ड ऑफ ट्रेड का मैं एक ज़माने में चेयर रहा था फॉर द ग्रोथ एंड पावर कमेटी एंड फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी। तो उसमें मैंने टाइम काफ़ी क्या कहते हैं इन्वेस्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं इसमें आ गया मिसिसागा आर्ट्स काउंसिल में, उसमें भी मैंने 4 साल का एक टर्म गुजारा। अभी मैं क्या कहते हैं उस बोर्ड को मैं छोड़ के आया हूँ। और उसके साथ साथ में मिसिसागा फूड बैंक वो जो है क्या कहते हैं यहाँ इस हमारे वेस्टर्न मिसिसागा में, इसका नाम है ईडन फूड फॉर चेंज, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो वो तकरीबन 2018 में मैं क्या कहते हैं बोर्ड पे आया। तो साथ साथ हम उसमें काम कर रहे हैं। एंड द मोस्ट रिसेंट जो आप कहते हैं इन्वॉल्वमेंट इन द कम्युनिटी इज थ्रू पील क्राइम स्टॉपर्स। तो पील क्राइम स्टॉपर्स में 2019 में मैंने क्या कहते हैं इंटरेस्ट लिया था। और फिर 2020 पे मैं बोर्ड मेंबर बन गया। तो तकरीबन 4 साल के हो गए। सही। अच्छा, हम देखते हैं आपको सोशल वर्क मुख्तलिफ हवाले से, जो ब्रेकफास्ट आपकी ईमेल्स भी आती हैं, चीज़ें हम देखते रहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये वॉलंटियर करना या कम्युनिटी के इन कामों में इन्वॉल्व एज एन कम्युनिटी होना, कितना इंपॉर्टेंट है? आपने बहुत अच्छा क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछा है भट्टी साहब, दैट यू नो व्हेन यू आर सर्विंग द कम्युनिटी, we're not serving the South Asian community only. We're not serving the Muslim community only. We're serving the community at large. और जहाँ तक आप देखें जो social services यहाँ हैं या आपके first responders की वो जो emergency services होती है, they serve everyone. तो it's incumbent upon us to make sure that we are providing the necessary support and recognition of these institutions, these organizations, and how to do that best is through community service, through volunteer service. And so getting involved in mainstream organizations like Eden Food for Change, या क्या कहते हैं Pure Crime Stoppers or the Mississauga Arts Council, as well as the Mississauga Board of Trade, these organizations are serving all communities, including our South Asians, including our Muslims. And so therefore it's important for us to have representation even at these levels. तो क्या आपने, जैसे मैंने कहा, आप मेरे ख्याल हमारी कम्युनिटी से, मतलब साउथ एशियन कम्युनिटी से तो जरूर हुए होंगे। हमारी कम्युनिटी से काउंसलर मैंने नहीं मिसागा, मुझे तो नहीं याद पड़ता कभी। आप ठीक कह रहे हैं, आज तक तो कोई हिस्ट्री में हमारे तरफ से तो कोई नहीं है।
I think Deepika Damarla, who's on council now, she's the only one from, you can say, providing Asian representation from any South Asian community. But from the Mississauga, we're talking about the Mississauga, Milton में तो हमारे हैं बहुत Milton में तो Brampton में भी हैं जी So क्या आप जब कम्युनिटी सोशल वर्क करते हैं, आपकी जो है इंगेजमेंट्स रहती है कम्युनिटी के लोगों के साथ, वो आपको लगता है कि अभी कुछ ट्रेंड है वॉलंटियरशिप का हमारी कम्युनिटी में, या लोग ज़्यादा आपको नहीं लगता कि इस तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं? अब आप वो कहते हैं ना, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल, राइट? तो जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, जो जितनी मैं हिम्मत लगा सकता हूँ, जितनी एफर्ट्स मैं कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी वो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसको देख के इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, एंगेज हो. तो आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, माशाल्लाह दे आर कमिंग एंड दे आर कमिंग विद एंथुसियाज्म. और वो ये देख रहे हैं कि देखो ये बंदा जो है ही इज ट्राइंग एंड ही इज ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो उनको थोड़ी सी वो जोश चढ़ती है कि यू नो व्हाट, इफ ही कैन डू इट and we can help him cross that finish line, then one day we too can be there. So इसी से मेरा क्वेश्चन है, so why you running and you're running again and again? Yes. Well, I love this community. Mississauga is my home. I've established a successful business in the telecom sector. I've raised a family, and you know I've contributed so much time through the various different organizations जिनका नाम मैंने लिया है. Same. So this is my testament, my conviction that I care about this community. And when I see what's happening in Mississauga Ward 5 and how this community has been disconnected and neglected from the rest of the city, I feel that I can really help this Mississauga Ward 5 community and Malton specifically reach its full potential. अच्छा, वार्ड 5 में क्या आपको लगता है what to be fixed, मतलब बहुत से क्या होगा आपने ज़ाहिर अभी इसको होमवर्क किया होगा, देखा होगा? जी. तो जो हम क्या कहते हैं दरवाज़ों पे खटका रहे हैं और हम रेजिडेंट से भी बात कर रहे हैं एंड बिजनेस ओनर से भी बात कर रहे हैं, सब चिल्लाए पड़े हैं कि यू नो व्हाट, दीज कार्स बीइंग स्टोलन फ्रॉम आवर ड्राइववेज, दिस हैज टू एंड. You know, this crime that is spreading throughout our city, are we in Gotham City or are we in Mississauga? ये क्या बात है? और आजकल लोग हमारे घर में से आके क्या कहते हैं break in हो रहे हैं, और क्या कहते हैं उससे ज़्यादा they're getting violent, these criminals. They're actually stopping people on the side of the road, pulling them out of the car and jacking the car. So crime is the number one issue that I'm hearing at the door, and this has to be tackled. And how are we going to tackle it? Right? अच्छा, अब ये तो हो गया एक है, आज वैसे एक बड़ा ग्रुप पकड़ा है पुलिस ने, जी, मैं देख रहा था. तो फिर प्रायोरिटीज आपकी क्या? ये तो होगा एक मेन, आपने बताया कि क्राइम जो है वो प्रायोरिटीज तो रखी होंगी आपने. क्या प्रायोरिटीज आपकी क्या हो सकती हैं, क्या होंगे कि इफ यू बी अ काउंसलर क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम एडवोकेट करेंगे फॉर अ न्यू पुलिस डिटैचमेंट इन माल्टन. आपको पता है तकरीबन 50,000 लोग रहते हैं इस कम्युनिटी में, और क्या कहते हैं, the closest police station that's fully serviced and equipped with resources is 11 Division, 12 Division, 21 or 22. Each of them are up to 20 minutes away. तो अब जब कोई आप 911 कॉल करेंगे, आप कहेंगे इट्स एन इमरजेंसी, तो 20 मिनट तो लग जाते हैं आते आते. इस दरमियान में there's so much that can happen that we need to bring the services closer to the people. Okay. So I believe that having a detachment, a full service detachment in Malton will certainly help to bring that level of safety and security to this community, number one. Number two, we need to have more patrols in the affected areas so that people know that, when there's a presence of police, the criminal element will stay at a distance. But if they know it's 20 minutes away, then they're calculating how much they can impact this area negatively. And I will tell you, statistically speaking, Batisa, that Mississauga Ward 5 has the highest rate of car thefts in the entire city. So much so it's 4 times the average of any other ward. इस वार्ड में 5 जी. ओके, सही, ठीक. So that means almost like 1 in every 4 cars stolen in Malton, in Ward 5. Ward 5. That's unacceptable. सही, right? सही. And we have to put a stop to it. अच्छा, अभी एक और बड़ा मसला, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, स्मॉल बिजनेसेस के हवाले से दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि अब ज़ाहिर इन्फ्लेशन आया, बहुत से कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई, बहुत सी नहीं भी हुई, तो वो भी कोई प्लान वहाँ के हवाले से भी आपने देखा है? Absolutely. Having served on the board of, Mississauga Board of Trade, chairing the International Trade Committee, chairing the Growth and Power Committee, which focuses on entrepreneurs and small businesses,
میرا جو کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے ایز اے بزنس اونر مائی سیلف دیٹ آئی ایم ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دی ایشوز اینڈ کنسرنز دوز بزنسز آر ایکسپیرینسنگ اینڈ ہاؤ ٹو پرائیورٹائز دوز اینڈ whether it's these businesses trying to get a permit to open their business, to put up signs for their companies, promote their businesses, or getting the zoning they require to be able to operate the business. These things have had far too much of a negative impact over the last decades, which has almost deterred businesses from opening up in Mississauga, not specific to Ward 5, but if we're able to remove that red tape and speed up the process so that we can get the answers to those investors, to those developers, to those business people who are filing the applications, that is going to be a priority. صحیح. اچھا اب آپ ظاہر ہے ڈور ناکنگ کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, فیڈ بیک کیسا ملتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے میرے خیال میں 15 کینڈیڈیٹس ہیں اس. جی 15 کینڈیڈیٹ ہیں, اور کیا کہتے ہیں اگر آپ اندازہ لگائیں 2022 الیکشن سے ایز اے کمپیریزن, اٹ واز دا لاسٹ جنرل الیکشن, سٹی وائڈ وی ہیڈ آلموسٹ 22% ووٹر ٹرن آؤٹ, رائٹ, ٹرن آؤٹ اوور آل. But in Ward 5, 11%. مطلب وہاں کوئی لوگوں کو بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اب آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیوں نہیں انٹرسٹ ہے, رائٹ؟ بیکاز دا پیپل آف Mississauga Ward 5 and specifically Malton, جہاں تک میں نے کیا کہتے ہیں سنا ہے, وہ کہتے ہیں you guys don't care about us, nobody is listening to us, you're making policies and governing according to what's happening in the rest of those areas, but you're not really paying attention to what's happening in Malton in Ward 5, and I think that is something that these small businesses and residents need as a champion in their counselor. اچھا تو کیسا فیڈ بیک مل رہا ہے پھر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو کیسا؟ آف کورس وہ تو لوگ تو دیکھتے ہیں کہ حیران ہوتے ہیں کہ تم آ بھی رہے ہو ہمارے دروازے پہ, تم بات بھی کر رہے ہو ہم سے, تم ہمیں انگیج کر رہے ہو, تم ہم سے پوچھ بھی رہے ہو, کیونکہ وہ کیمپیننگ میں یہ ہوتا ہے کہ یو کین ایدر ٹاک اے لاٹ اور یو کین لسن, اینڈ میرا کیا کہتے ہیں جو ایکسپیرینس ہے از ٹو لسن, و ask the voters what are their priorities. ہاں نہیں ویسے تو وارڈ 5 کی جو ابھی جو کونسلر رہی ہیں جو ابھی ظاہر ہے فار دی میئر ابھی تو کام تو انہوں نے بڑا جو بتاتے ہیں انہوں نے بہت کام کیا. Of course, and there's no doubt. I'm not saying that there was work that wasn't done, but there's still more work to be done. And جو کام ہو چکا ہے اس کے اوپر ہم زیادہ اور کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا اب یہ وارڈ کیونکہ بیسیکلی مالٹن مین ایریا ہے, کیا اس کی کچھ بتائیں گے لوگوں کو؟ ویسے ہم چارٹ لگائیں گے, لوگوں کو پتہ چلے گا اس حوالے سے. اس کی باؤنڈریز کیا ہیں؟ باؤنڈریز بڑا اچھا کوشچن ہے. نارتھ میں 407 ہائی وے ہے, ایسٹ میں کیا کہتے ہیں ہمارا 427 ہائی وے ہے, ساؤتھ میں ایگلنٹن ہے, اور پھر ویسٹ میں میوس چلتا ہے, پھر سوری ہائی وے 10 چلتا ہے, پھر میوس بن جاتا ہے. تو اچھا خاصا وارڈ ہے, بڑا یہ وارڈ ہے. اٹ از ان فیکٹ سب سے زیادہ پاپولیشن اینڈ لینڈ ماس اسی وارڈ میں ہے, وارڈ 5. اچھا امپورٹنٹ ترین ویسے جو آپ نے مسئلہ بتایا یہ کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں, یہ بڑا امپورٹنٹ. اگر اوور آل آپ جنرل الیکشن میں 11% ہے تو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ لوگ جو ہیں اس والے سے جو ہے وہ نکلیں. اچھا پرائرٹیز تو آپ نے کر لیں, اب ان کی آپ کی جو والنٹیئرز ہیں, مطلب ایک تو لوگ دو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں جی, بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ویسے آج کل تو کیونکہ اب تک سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ انفلوئنس کرتے ہیں, اب ظاہر اس میں آتا ہے. تو آپ کی ویب سائٹ پہ انفارمیشن آپ کی ساری سوشل میڈیا پہ ہے ساری؟ جی ماشاءاللہ, اگر آپ جائیے ہمارے ویب سائٹ پہ imranhassan.ca, یا آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو کریں عمران حسن YYZ, تو آپ کو سب معلومات ہو جائیں گی کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کہاں تھا, میں کس ایریا میں کیا کہتے ہیں انویسٹ کر چکا ہوں اپنا ٹائم, اپنا والنٹیئر سروس, اور ہماری ویڈیو بھی چھوٹی سی 1 منٹ کی بنی ہوئی ہے جو آپ کی پرائرٹیز سمجھائے گی. اچھا اب کچھ دن ہی باقی رہ گئے, 2 ہفتے ہیں آج, 2 ہفتے باقی. تو سب سے امپورٹنٹ ایک اور چیز ہوتی ہے ایڈوانس پولنگ. جی وہ بھی بڑا افیکٹ کرتی, تھوڑا سا ٹرینڈ پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کیا ہے. تو میں خیال اس ویکینڈ پہ ایڈوانس پولنگ ہے. ابھی کیا کہتے ہیں ایڈوانس پول گزرا ہے جو تھا کیا کہتے ہیں 24-25, اور اب وہ جو آنے والا ہے 1st and 2nd it will be the last advance poll. اس کے بعد پھر everything is closed and then it will be the 10th. اچھا اس میں جو ایڈوانس پولنگ ہے, فرسٹ تو میرے خیال سٹی ہال جانا پڑتا تھا, لیکن اب شاید 1st اور 2nd میں آپ کے پاس جو بھی لسٹ ہے وہیں جا سکتے ہیں. تو جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لاسٹ ویک وہ تھا کیا کہتے ہیں سٹی ہال میں. اس دفعہ in Ward 5 there's only 2 community centers that are open. One is Frank McKechnie and دوسرا وہ جو ہے is Malton Community Center. صحیح ہے. لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ جو اس دفعہ اچھی چیز یہ انہوں نے کی ہے پولنگ کے دن شاید
کہ کہیں بھی آپ چلے جائیں انہوں نے کمپیوٹرائز کر دی ہے. Yes. So you can vote any Yes. polling station. Yes. That's very good. Yes. چلیں جناب وش یو گڈ لک. شکریہ اور بہت بہت. کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو تو آپ پلیز. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز ریمبر دیٹ دی بائی الیکشن از June the 10th اینڈ یو ہیو اے چوائس ٹو ہیو یور وائس ہرڈ. اینڈ پلیز اگر آپ خوش نہیں ہیں کسی چیز سے تو آپ ضرور کیا کہتے ہیں آ کے آپ اپنا ووٹ ڈالیں اور اپنا سپورٹ ڈالیں جس کینڈیڈیٹ سے آپ زیادہ کیا کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے ویلیوز اور اپنی پرائیورٹیز سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں فرسٹ ٹائم نہیں کھڑا ہو رہا, دس از مائی 4th ایفرٹ اینڈ امید یہ ہے کہ آپ کے سپورٹ کے ساتھ ویل بی ایبل ٹو کراس دیٹ فنش لائن, گیٹ ٹو ورک آن day 1 اینڈ ٹیکل کرائم اینڈ ٹیکل افورڈیبلٹی اینڈ گیٹ دا جاب ڈن. تھینک یو ویری مچ اور بہت شکریہ اور آپ کے لیے گڈ وشز ہیں کہ آپ اس دفعہ کامیاب ہوں. شکریہ. عمران حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وارڈ 5 مساگا کی سٹی کونسلر کے امیدوار ہیں. 10 جون کو الیکشن ہو رہے ہیں اور 1 اور 2 جو ویکینڈ ہے اس پہ ایڈوانس پولنگ ہے, تو کوشش تو کیجیے ایڈوانس پولنگ میں ہی. آپ ویکینڈ پہ تھوڑا وقت ہوتا ہے, جائیں پوری فیملی جائے, ووٹ ضرور ڈالیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ یہاں پہ ہر چیز مانیٹر ہوتی ہے, آپ کا ووٹ آئے گا ان کو پتا ہوگا کہ کون سی کمیونٹی کا ووٹ, دیٹس ویری امپورٹنٹ. تبھی لوگ جو ہیں وہ جب کوئی چیز بنتی ہے, بجٹ بنتا ہے, بہت ساری چیزیں بنتی ہیں, تو بہت مائنوٹلی ان چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ کون سی کمیونٹی کتنی انوالومنٹ اس کی, کیا کر رہے ہیں. تو یہ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ووٹ ضرور ڈالیں, چاہے ایڈوانس پول میں ڈالیں یا 10 جون کو ڈالیں. اور آپ اپنا یہ فرض ہے, آپ کا بھی حق تو ہے جیسے میں نے بتایا, فرض ضرور ہے, تو ووٹ آپ جو ہے 10 کو یا 1 اور 2 کو ضرور ڈالیے گا. دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز. ان آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز بشرط زندگی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا. Trying how to get a house. You remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं. आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं. एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. Call now at 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. घर में सबकी healthy life के लिए Greenish Natural Health. Grandpa, husband, kids और wife के लिए Greenish Natural Health. एक टैब दे इन्हें दिन भर की energy और पूरा दिन रखे इनको active naturally. Greenish Natural Health, healthy living for the whole family. مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمیسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respected brothers and sisters,
We are now here inside Gaza between the rebels and destructions. Behind me, as you see, complete destructions of the buildings and homes inside Gaza Strip. There are at least 1 million IDPs inside Gaza Strip, and the humanitarian situation is going worse for millions of the people who are living here in this land. Alhamdulillah, ICNA Relief is on the ground here in Gaza providing emergency response to help their brothers and sisters in where situation is going very worse. This is the worst disaster for the Palestinians since 1967. We have at least 20,000 apartments and buildings have been destroyed completely due to the attack and ongoing airstrikes on Gaza Strip. We hope from you, brothers and sisters, to continue your fund, to continue your aid so that inshallah we can reach to the thousands of IDPs so that can help your brothers and sisters in Gaza. All thanks for our donors. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all your donation. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए with ICC Immigration मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ ICC के साथ ICC इमिग्रेशन के RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रहे हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। ICC Immigration. I was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My School is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders. My School, the School of Leadership. Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. Events mark successes in our lives. Come and host your next event at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, close to Mississauga, Milton, and Oakville, with extensive parking spaces, more than 23,000 square feet of space, with capacity of up to 1,100 guests. Galaxy Grand Convention Center, where every guest is a star. Book your event today. Call 905-458-9888 or visit galaxygrand.ca. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, audits, reviews, and other assurance engagements. 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor,
at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. In times of trouble, what do you do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snober Nas, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our 2 convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snoberlawyer.ca. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. In this world, nothing is certain except death and taxes. But did you know that if you don't plan properly, your family can lose 25 to 50% of your hard-earned assets to taxes when you die? It doesn't have to be that way for you. For over 20 years, my team and I have been helping small business owners, corporate professionals, and wealthy families minimize their taxes and maximize their estates. Your planned future success is our passion. We look forward to helping you to maximize your financial life and legacy. Call me when you are ready. Team Farhan, Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. टीम फरहान को एक दफ़ा खिदमत का ज़रूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. teamfarhan.com. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा,